अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपका ख्वाजा मोइनुद्दीन। आज हम लोग मटन खीमा समोसा बनाएंगे। जी हाँ, एक बहुत आसानी तरीका है और एक ट्रेडिशनल वे में बना के दिखाएंगे। इसके साथ साथ हम लोग आज वेज पुलाव भी बना के डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। चलिए। मटन खीमा समोसा प्रिपरेशन से पहले हम लोग खीमा को अच्छी तरह पकाएंगे। इसको एक अलग अंदाज में पका के दिखाएंगे। पहले इसमें हम लोग ऑयल ऐड करेंगे। खीमा ऐड करने से पहले ही हम लोग इसमें फाइनली चॉप्ड गार्लिक और जिंजर ऐड करेंगे। जिंजर और गार्लिक ऑयल में थोड़ा सा फ्राई होते ही हम लोग इसमें मटन खीमा ऐड करेंगे। खीमा 2 मिनट पकाते ही हम लोग इसमें फाइनली चॉप्ड ग्रीन चिल्ली ऐड करेंगे। ग्रीन चिल्ली के साथ साथ हम लोग इसमें रेड चिल्ली पाउडर, सॉल्ट और टर्मरिक पाउडर ऐड करेंगे। नेक्स्ट इसी में हम लोग कोरिएंडर पाउडर और थोड़ा सा क्यूमिन पाउडर भी ऐड करेंगे। इन सारे इंग्रेडिएंट्स ऐड करते पर भी हम लोग इसमें थोड़ा सा दही भी ऐड करेंगे। खीमा में अच्छी तरह फ्लेवर लाने के लिए हम लोग इसमें ब्लैक कार्डमम ऐड करेंगे। खीमा परफेक्टली बॉईल हो गया है। इसी में हम लोग इसी वक्त थोड़ा सा घी भी ऐड करेंगे। समोसा प्रिपरेशन से पहले ही इसी बॉइल्ड खीमा में हम लोग फाइनली चॉप्ड ऑनियंस ऐड करेंगे। ऑनियंस के साथ साथ इसी में हम लोग फाइनली चॉप्ड मिंट और कोरिएंडर भी ऐड करेंगे। इस सारे प्रिपरेशन के बाद हम लोग जो समोसा प्रिपरेशन के लिए जो शीट्स लाए थे, रेडीमेड जो शीट्स मार्केट में मिल जाते हैं, समोसा डो शीट्स, जी हाँ, इसी शीट्स में हम लोग जो मसाला पका के रखे थे उसी मसाले को इस्तेमाल करके हम लोग समोसा फोल्डिंग भी दिखाएंगे।
इसी तरह सारे समोसा प्रिपेयर करके रखेंगे। उससे पहले हम लोग एक तरफ प्रिपरेशन चलते रहेगा, हम लोग ऑयल में भी फ्राई करेंगे। आज के वीडियो देखते ही अपने दोस्तों को और रिश्तेदारों को शेयर करना ना भूलें, उसके वजह से और भी थोड़े लोग फ़ायदेमंद हो सकते हैं।
इस लॉकडाउन के टाइम पे अपने बच्चों को भी मटन खीमा समोसा बना के दीजिए। नेक्स्ट वीडियो अपलोड होने तक नवाब्स किचन फेसबुक पेज पे ढेर सारे वीडियोस है, उसको भी देखिए, एंजॉय करिए और हमारे टीम के लिए दुआ करिए। अल्लाह हाफिज़।